Okay, look at the first 2-3 chapters. We have practice maps. Geography का एक वॉल्यूम दो मुझे. तूने नहीं लाया? हाँ, take it out. देखो, the first chapter R&D, resources and development. मैप नहीं है. जुलाई और अगस्त का आपने पूछा था ना. हाँ, मिल गया. क्या है? रेरा का पता है सर. रेरा का फुल फॉर्म बता. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. नहीं, ये तो ग्राफ है. हाँ, एंड जुलाई अगस्त के साथ कुछ तो कनेक्शन है सर. ऐसा कुछ नहीं है. अगस्त सीजन का नाम उसका इक्वालिटी देखने के लिए. जूलियस सीजर टोल्ड आई एम द बिग रूलर. तो माय नेम से जो मतलब ये जितना भी इंग्लिश का मंथ है ना, राइट फ्रॉम जैन टू दिसंबर, इट हैज बीन बेस्ड ऑन सर्टेन किंग्स, ये रोमन कैथलिक्स. तो जब जूलियस सीजर ने बोला कि मैं बहुत बड़ा राजा, तो मेरा नाम का 31st डेज रहना Augustus. But what is his full name? Augustus का? Augustus Caesar. He is the son of Julius. अच्छा. So he also told कि मैं भी उतना ही बड़ा है, तो I also need 31 days. So that is the reason July and Augustus इसका बेटा है, जिसको लोग मारते हैं. अच्छा, वो इसका क्लेयोपेट्रा का लड़का. Now look here. Now only ICC people have come. They were asking 1 or 2 students. Whenever you are marking a map, now for CBSE the marks allotment is very minimum. You know how much it is? 5. So be very sure history will take up the minimum and geography will take up the maximum. Either 4+1 आएगा या 3+2. अभी हिस्ट्री टीचर तो you check with your history teacher. Normally वो INC का जो sessions है ना, वही आएगा. First session, where it broke into 2, where it unified, etc. या जलियांवाला बाग massacre, वो जरा याद. As far as geography is concerned, there are different chapters. Certain chapters are only for map. Can you name which 2 chapters? Water resources. So you be very sure that map questions coming from those 2 chapters will be given high. Abhi I remember on that day when I taught you right from Kerala to JNK. Everyone remembers? फिर से एक बार करता हूँ. Because nobody is going to ask you the state. Nobody. But at least for a 10th standard CBSE, you must know. Abhi there is no confusion between these 2 South Indian. No. Kerala is on the which coast? Eastern. Sure. West. So you decide. कोई eastern coast भी है क्या बोल? It is always on the west coast and Tamil Nadu is on the east coast. और एक point of difference, Kerala receives first showers in India. What is that shower known as? Mango showers. Besides Kerala, which other part in India gets the first shower? ये क्वेश्चन आता है MCQ में. तमिलनाडु के सूखा हो गया. तमिलनाडु की तो बारिश ही नहीं होती. It is Andaman. Andaman gets the first shower. Okay. ये दोनों स्टेट क्लियर है. Just above Kerala is Karnataka. No confusion. There is no division in Karnataka. You see? Let me take some pointers. कुछ big points है. 15 inch का बड़ा स्केल है क्या? 35. ज्ञान आता है भाई. अच्छा, good है. अच्छा है. ये देखो. When we are moving away from Kerala, this entire Karnataka is one. But then we have a very small part called Goa. Okay. And if they ask you the coast, this is called as Malabar coast. Maharashtra, Konkan coast. And then if you just move up Maharashtra, we have the centralmost part of the India called as Madhya Pradesh, central. And ये जो part है, correct? Chhattisgarh, a part of Madhya Pradesh. Now it's a separate state. It shares boundary with Maharashtra,
तेलंगाना, ओडिशा इसके साथ नहीं है। अभी ये एंटायर आंध्रा था. Now this part has become Andhra Pradesh and this has become Telangana. Clear? I'm distributing the map. Please mark all this. Only the states. Because पता नहीं कौन सा टाइप पे CBSE का दिमाग क्या चलेगा. Take one and pass one. एक बंडल उधर से. हाँ. Take one and pass one. No. Take up your pencil. Put the heading states over here. Put the date. आज का date डालो right hand side. हाँ. पूरे. And in board exam you have to write your roll numbers. Never leave. Extra supplement पे, extra map में सब में लिखो. इतने bundling सब सेफ ही होता है. मैं खुद भी खा रहा हूँ. ये टाइम तो हम लोग का वो बैंक में गया था. पहला जो क्वेश्चन पेपर आता बैंक में जाता है. फिर वहां से वो एक दिन पे रिलीज करता. पुलिस जाएगा, फिर बैंक कर देगा, मैनेजर बोलेगा. हमारा नाम का स्कूल का नाम का बैंक में अकाउंट रहना चाहिए. डन. स्टार मार्किंग फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक एंड तेलंगाना. ये मैप में जल्दबाजी नहीं चाहिए. आराम से करो. आंध्रा तेलंगाना. Up till you go up till Telangana and Maharashtra. Andhra Telangana not divided. It is divided. नहीं है. अरे पहला ये पूरा आंध्रा था my dear. Now it is this. हाँ but इधर लिख दिया है. आप डिवाइड कर लेना. एक छोटा लाइन ड्रॉ करना in between this one. You see है देखो ऐसा पकड़ने का. गोवा का जो टॉप नॉच लाइन है वहां से स्टार्ट करो और ये कहाँ तक जाएगा somewhere here. तो ऐसा. और ये तेलंगाना महाराष्ट्र के अंदर ऐसा. इसको तो मिला है तेलंगाना और आंध्रा. तुम लोगों को मैंने कर दिया. Done? Yes. आराम से करो. कोई जल्दी नहीं. The full time is for maps. Next time you face any NDA people, तो देखा भारत मैप में हमारा स्टेट किधर है. उधर ढूंढना पड़ेगा सर. अभी याद नहीं. Last you left and right. And what is the strait which creates a distinction between Park Strait? वो भी मार्क करो. ये छोटा सा पार्क जो है पार्क स्ट्रेट है. ये इंडिया एंड श्रीलंका सेपरेटेड बाय PALK पार्क. नहीं राम सेतु नहीं है. ये पार्क स्ट्रेट. PALK STRAIT पार्क स्ट्रेट. इंडिया एंड श्रीलंका सेपरेटेड बाय पार्क स्ट्रेट ऐसा बोलते हैं. Shall I go ahead? Yes. Now look at the other states. अभी North Indian state आके मैं थोड़ा सा time लूँगा because that is where they will ask you maximum, and that is why you will put a jumble up. So now when it is Andhra and Telangana, look here. I'll say two right hand side states we have, Chhattisgarh and other is Odisha. And just above Maharashtra we have Madhya Pradesh, and Madhya Pradesh का exactly ऊपर UP. रुको वो मैं अलग से एक फॉर्मूला देता हूँ आंसर without any confusion. So we have Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra and UP, and then wait.
Why she is not all? Is your name? Date डाला है, date डालो, ये habit ही बना लो। ओए, तीनों को क्या चल? ठीक है। Shall we? Now earlier this Bihar was like this. If you remember your 1907. What is 1907? 1907. क्या है? हिस्ट्री में क्या है? Kolkata. Partition of Bengal. And in those days this Bengal was Bihar. ये तो बिहारी था. Bengal, Odisha, ये इतना बड़ा province था वो. You remember सिराजुद्दीन दौला? हाँ, कौन था? वो नहीं पता। नहीं पता. Which is the first battle of British in India? Very good history. Which year it was? 18 something. Very good. 18, 19, 17. 19th century. ऐसा याद रखो रे 1757 हाँ एंड और एक बैटल हुआ जिसके बाद उन लोग ने बंगाल को अपने हाथ में ले लिया बैटल ऑफ बक्सर which year it was मेरे जॉलर की सारे क्यों बड़ा she's crying क्यों बड़ा no baba why baba 1764 is battle of Buxar सिराजुद्दीन दौला का जो son in law था वो था he was having a battle with the British finally they deposed him also तो ये पूरा बंगाल उनके हाथ में है ये वेस्ट बंगाल अभी आपको याद रखने का बिहार इज टॉप झारखंड इज एग्जैक्टली डाउन एंड उसका राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वेस्ट बंगाल मार्क करो बिहार टॉप झारखंड बिलो एंड राइट साइड इज वेस्ट बंगाल मैं कभी गया नहीं लगता देखो मैप टाइम डोंट डू मस्ती आई कैन नॉट टीच मैप्स एवरी नाउ एंड एक बार कर लो सॉल्व कर लो बस So Abhi, shall I ask one person to hold that map? Come here. He or she has to, without looking into the map, say all the states. All this year. Whatever your mark. हाँ सही है चलेगा Confirm? confirm है देखो एक रॉन्ग पे 2 चॉकलेट एक सही पे चॉकलेट नहीं चलो ये चलो एक I'm going to ask you not directly the name of the state. I'll give you some clues, then you have to tell. Okay, sir. मैं चॉकलेट चाहिए तो एक सही पे 2 मुझे देने का एक गलत पे एक ही दो चलेगा मतलब चिन्ह भी मेरा और पट भी मेरा चलो आ जा this person come she will hold this map clue will be given by me she will not look behind done chalo now tell me the all the states which included partition before Bengal अरे look ना what is this hey you are the camera say cheat हाँ बोल hold the map your side also no problem all the 3 states which included before partition Bengal Bihar, Jharkhand. where it is I can see Bihar there Bihar, वो तो झारखंड है Bihar है. अरे रुक ना यार Bihar, अरे वो तो वेस्ट बंगाल है मैं किया Bihar है. बिहार है Jharkhand Jharkhand और West Bengal. why it is West Bengal it is on the east side now It was it is on the east side why it is named as West Bengal Bengal के west में अब आ जाओ
Thank you. At least she has given. She has She has to give me 2 chocolates. अरे हमेशा मैं ही देता रहेगा कभी. Listen, why it is known as West Bengal? Anybody? Although it is on the eastern part of India. When we had East Pakistan and West Pakistan, this was also part of that. Although, अभी भी आप कोलकाता में जाएगा ना, there are certain places called 24 Parganas, named by the Britishers. और वो कौन सा bridge है? Howrah Bridge. There are certain parts which are named by British. They have kept as it is. Correct? चलो, next we will have a boy coming. हाँ, he comes. इसके लिए बहुत easy वाला है. Tell me the state in which we have northeastern monsoon. Not southeastern state. Northeastern monsoon. South Indian state where we have northeastern monsoon. अभी इनफैक्ट मैंने वो स्टेट का नाम भी लिया है ना. So Tamil Nadu. Very good, Tamil Nadu. Why Tamil Nadu? Why not Kerala? So because it's बोलेगा वो उनसे देख. हाँ? so because it's in the west. West in the east way. अच्छा, which state in India gets the first shot? So the Kerala. Why? So नीचे जाता है नीचे अच्छा, what is the name of the shot? sir mango jar. Right? अरे Very good, very good. Then this girl, what's her name? आप जाओ. Sumiti, right? आजा भाई जा Anvi, Anvi na. I forget the name. Now you tell me the state which is divided into 2 before few decades. South Indian state. And we have Chandrababu Naidu as one of the अभी तो पता चली Where is Telangana? Draw it on the map. Give her a pencil. She's taking. I'm going to the good. एक tricky question बाकी है. अरे आगे जाके आप मेरा नाम रोशन नहीं करेगा. Show me the boundary myself. Oye, Smith. I know what फालतू groups नाम देती है. nothing sir इसके लिए इतना असर चले हैं. cool हाँ, tell me Telangana capitals of these 2. Capital of these 2 states. जाओ मैप देखो. Check. Who is telling that? Big boy. उधर दिया रहेगा कैपिटल्स. यार आना नीचे आ जाओ, ग्रिड में आ जाओ. वो तो हिस्टोरिक है भाई. हाँ उधर टेबल में दिया है. आंध्र और तेलंगाना का लो. ये में आ जाएगा आंध्र. हैदराबाद. हाँ. तेलंगाना टी में जाओ. एक्स में मत चलो. तेलंगाना हैदराबाद. अच्छा ऐसे कैसे? ये भाई कहते हैं. मैंने आज चल जाके देख. ये रामेश्वर का चला. ये भी अमरावती लिखा है क्या देखो. नेक्स्ट इज दिस पर्सन जैकेट वाला बॉय जैकेट वाला. नेम ऑल द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. यू कैन शो इट ऑन द मैप. अरे सॉरी ये मेरा वाला है. मैप में भी दिखा सकते हैं क्योंकि इधर क्या ये वाले. हां शो द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट एंड व्हाट इज इट्स नेम. This is west coast Yes, correct. and this is east coast. Name it, different parts. This is Gujarat. कोस्ट अच्छा ये मलाबार कोस्ट है ना. ठीक है. ये कोंकण है. और ये नहीं पता. ये भी नहीं पता. ये आपने बताया ही अभी आपने बताया ही था. तो पूछना था ना मेरे से. ओडिशा का साइड तो नॉर्थन साइड है.
ये नॉर्दर्न से Coromandel coast. वही पूरा northern circle. ओके और When you come कोरोमंडल into Tamil Nadu, it is called as Coromandel coast. थैंक यू सर Name the two islands which are to the two South Indian states, and tell me the distance also. ये आइलैंड है So the अंडमान एंड निकोबार it आइलैंड is to the ईस्ट which South. sea it is. साउथ ये बे ऑफ बंगाल Okay, how about the other one? लक्षद्वीप Where अरेबियन सी where it is nearby? केरला Kerala. And which is a coral island and which is a bigger island? ये केरला लक्षद्वीप है तू रुका, वो बोलेगा ना भाई. नहीं पता सर ठीक है आता है. Then let us ask Smith to come in. Smith से के बाद तो बर्बाद कर दो. Nice, sir. You seem to be the only intelligent boy in my class. Wrong है? Now tell me the क्या बोलते हैं ना important parts of Maharashtra where we have the west flowing rivers. The two west flowing rivers in Maharashtra. Godavari wrong है. गोदावरी Wrong it is. अच्छा तो रुक जाओ इधर रुक जाओ बैठे. सर बहुत सारे रिवर है यार क्या है proud Maharashtrian तो ऐसा है. अच्छा? भीमा क्या क्या लिखा है Tributaries are Which is joining Arabian Sea. I think Anvi can tell or the next person. Will she? पेनगंगा लिखा हुआ है Trisha. सही में लिखा हुआ है पेनगंगा वाइनगंगा बाबा अरेबियन सी में जा रहा है अरेबियन सी में जाना चाहिए. West flowing, रुक जाओ, रुक जाओ। Get ready, Trisha. नाम भी बोल देगा चलेगा. I don't know the location. मैंने कितने ही बार बोला थे. Ask it. आ जाओ. स्मिथ से ये उम्मीद नहीं. अरे तो सर दिखे नहीं ना कैसे देखेगा? हाँ, आ जाओ. वंस अगेन. ठीक है. तो देखना चाहेगा तो देखिए. Tell me the two west flowing rivers here. In Maharashtra. Yes. All over India so it. Next is your ये सब मैंने लेक्चर्स में ही थियरी में कितने बार बोला है और आया भी है ना. उधर भी तूने रॉन्ग लिखा था. अभी याद है. बेटर ना. सीजन नहीं है. What kind of Hindi? हाँ? देखो. Sitting on the bed of conch. How will you survive? ओह क्या हो गया. अच्छा ठीक है. Tell me the union territory which is in south. Lakshadweep. Okay, very good. और Or अच्छा हाँ और क्या बोला. Andaman. अंडमान एंड निकोबार. ओके. अरे स्टेट के बीचों बीच भी है. अभी वो स्टेट बना. दमन हाँ वेरी से सर ने बोला तो है देखो आई एम नॉट अ पर्सन से कि मैं बोलूं तो राइट ही है. हाँ गोवा गोवा वेयर इज गोवा. गोवा में क्या मतलब गोवा. रुक जा मैं बता. हाँ गोवा का कैपिटल पणजी. हाँ इट्स पणजी. पणजी am I correct? Now tell me the state which has the capital IT city number 1. ये क्या है ये हम लोग IT IT city number 1 state. वो आके एक स्टेट का कैपिटल है. साउथ इंडियन स्टेट का कैपिटल है. एंड वो IT में इंडिया में पूरा सबसे बेस्ट है. आ जाओ. गुड गुड. वेयर इज इट. गुड गर्ल यू आर. Karnataka. हाँ कर्नाटक. वेरी गुड. आ जाओ. गुड गर्ल. नोज मैप्स. You want to check me? No. हाँ चलो. कौन रेडी है? Only 3% are allowed to ask only one question. And then if I answer it, you have to pay me suitable rewards.
चलो नहीं 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 अरे आपने भी अगर आपने मेरी वर्ड नहीं लिया हाँ तो तुम लोगों ने पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ चलो get ready, you can ask me the toughest question. Girls as well as boys, है ना? हमेशा टीचर ही क्वेश्चन पूछने का जरूरी नहीं है ना, है ना? She is getting ready. देखो, there are certain shortcuts and keys that they expect in map. One, as I said, always your roll number, date, and then keys. अभी वो ICSE के बच्चे ने क्या पूछा? जब keys बनाते हैं, don't write the names inside the map. It becomes very, shabby या congested दिखता है. Numbers डालो. अभी soil का chapter है, soil का वो जहाँ मिलता है उस जगह का नाम नहीं पूछेंगे, area ही पूछेंगे. Area and location अलग अलग है. Area मतलब where black soil is found, you can mark even Maharashtra also. Understood what I am saying? So be very careful, and whatever symbols you are using it here, always correspond the same symbols here. इसका confusion कैसे clear करने का? मैं मेरा map टाइम में क्या करता था, पहले grid या key बना लेता था, and उसमें जो भी symbol डालेगा उसके आगे लिख भी देता था. Then I will start marking the map. What we generally do? पहला मैप में, फिर उधर का की नीचे आया, सॉइल का की ऊपर चले गया, क्यों टेंशन ना? एंड 5 मार्क्स टू बी वेरी केयरफुल, करेक्ट? इट कैन बी अ बोनस टू, कैन क्या, वो तो बोनस ही है, उधर कुछ मार्क्स कट करेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट मेक अ मिस्टेक. द थियरी आंसर आई कैन कट द मार्क्स. मैप, and to be very frank, CBSE maps or neither the ICSE, they do not have this longitude and latitude. Our school days always longitude and latitude. We have to draw the lines, check कहाँ जाके वो intersect होता है, वहाँ जाके हमको मार्क करने का, करेक्ट? उसमें भी हमारे कुछ फ्रेंड्स पेंसिल पकड़ के बोलने लगे, दिल्ली मार्क कर दिया, किधर गया? केरला के बाजू में, और उसको मालूम था केरला का बाजू में तमिलनाडु, फिर भी मार्क किया. मैम ने 2 छापट लगा लिया, व्हाई दिस इज, मेरे गलती नहीं है, पेंसिल जहाँ गिरा वो स्टेट है. So don't play, get serious. 5 marks can be आपका कोई अच्छा आंसर जो आप लिखा रॉन्ग हो गया, this 5 marks can boost you, correct? चलो, हाँ, now let me see, we have got 20 minutes, you can ask me. किसका? Very difficult. यहाँ पे देखिए, बहुत आसान है. और फर्स्ट अल्फाबेट बोलो. चलो लास्ट अल्फाबेट बोलो. आई. Kavarachi. क्यों पता है? I really love that name, Kavarachi. और कुछ? चलो girls. सारे 7 sisters और उनके कैपिटल. हाँ, वो सिखाना पड़ेगा. आप पहले बताओ. देखो, first we have Assam, अरुणाचल प्रदेश. कैपिटल. हाँ, सारे पहले स्टेट तो बोलिए. मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, और क्या बच गया? त्रिपुरा, है ना? अभी कैपिटल आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज. असम इज दिब्रुगढ़. दिवाली पे सबको पहले कितने हैं? उसका देखो बेटी का तो चाहिए. अरे सर क्या बोलेगा? आप लोग में से कोई जाओ, उसको पैसे दो आएगा, क्यों पैसे? हाँ, then अरुणाचल प्रदेश हुआ, then we have next one मेघालय. What is the capital? चिरापुंजी भी नहीं है, मौसिनराम भी नहीं है. Got me red-handed. ईटानगर आके अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है. Am I correct? Yes. And मौसिनराम, तो ये मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. और कुछ पूछो. सारा 7 सिस्टर तो बोल दिया ना. कैपिटल इज अ रियल डिफिकल्ट. तो बोल दिया ना, स्टेट का नाम तो बोल दिया है. अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा. Yes. इतना याद है. ऐजवाल मणिपुर, राइट है? बिल्कुल भी. आप देखते हैं ना, ये देख, सिक्किम का क्या? अरे ऐजवाल मणिपुर का मणिपुर का इम्फाल है. इम्फाल, एंड ऐजवाल और इज ऐजवाल का है मिजोरम. कोहिमा. है.
So shall I teach you how to mark the seven sisters without any confusion? देखो, whenever we are starting, we have आप जैसे एक formula देता हूँ. First we start with Arunachal Pradesh. Wait, don't mark. A. Second below is Assam, and third is Meghalaya. आपको हटा के हम लोग ने आम बना दिया. तो again I start Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya. अभी confusion ये दोनों के बीच में. But then how do we start with? It is N M M T. N M M and T. How do I start with? Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. चलो start करो. Carefully, आराम से. How many are tortured by the life? Very great question. How many lives are torturing you? This is a meaningful question. Smith बोलेगा नहीं पापा, नहीं मम्मी, neighbors. देखो, sometimes even I also believe that छोड़ देने का है ना. Indian मैंने के लिए no mobile phones, no contacts, nothing. मैं ऐसे रहना चाहता हूँ. 10 दिन के लिए कोई contact. अभी college का start हो ये इसका मैसेज उसका integrated था ही. कुछ setup. पर आपको है ना? क्यों भाई? वैसे से आपको if you feel India वो से की similar things. Hey guys, हो गया? अभी now let us go for the states only, not the capital, because आपके लेवल पे capital नहीं पूछेंगे. तो again आम, who will say आम? Assam, Meghalaya. Let us stop it here. Then Nagaland, Mizoram and Tripura is very easy. अभी एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग सिक्किम बोलते हैं. Where it is? इधर है. जिसका कैपिटल है गैंगटॉक. है ना? मैं बहुत दिन तक बचपन में इसको बैंकॉक तो मुझे याद है जब माइकल जैक्सन आया था एशियन टूर में, he came to Bombay also, not Bombay. He came, हाँ, सेंट्रल होटल में रुका था वो उसका जू वाला. तो मुझे किसी ने बोला बैंकॉक आया. अरे वेरी गुड. फिर सिक्किम. अरे वो गैंगटॉक है. अभी थाईलैंड प्रोवाइड्स यू 60 days of visa free travel. You know that? आज ही मैं मेरा तो बाहर का कुछ ना कुछ पढ़ाई चालू रहता है. If you have a proper valid passport, you can get into Bangkok 60 days. उसके आगे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं. देखो टूरिज्म के लिए क्या क्या वो लोग प्रोवाइड करता है. And you should watch the place called, not watch, you should visit the place called Bangkok. वो सबको पता है क्या है वो बताया. अच्छा ठीक है. Let me come back to India. Okay, अभी somebody told me that Mizoram, मेघालय में दो जगह है जो आपको केयरफुल रहने का. Highest rainfall is not Cherrapunji, it is Mawsynram. How much rainfall does it get at? It is 1080 centimeters. 1080 annual average. Annual. And I planned to go to last year with the rainfall, but my friend told कि तू ये असम से ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके जिंदा चले गया तो उधर जाए. तो फिर बोला नहीं मैं नहीं आता. असम में जाके मरने का नहीं, इधर महाराष्ट्र में मारा तो कोई तो आएगा. अलग स्टक है. चले गया. अरे वेरी गुड यार. कल से लेक्चर कैंसिल. असम में because Brahmaputra is the place, if you see it starts somewhere here. देखो it enters this place. If you want to show. ये देखो ब्रह्मपुत्र. Are you seeing? And it starts from a place called Mansarovar. और आपका ये 5 tributary जो river है, that is also Mansarovar. Like वैसे गंगा somewhere here, यहाँ से जो गंगा निकलता है, it is Gangotri. फिर यमुना is somewhere here, Yamunotri.
Whereas Brahmaputra comes from Tibet, enters India from Arunachal Pradesh, ये place का नाम दियांग बोलते हैं, and it comes into India. Here it flows and असम का तो खटिया खटी कर देता है, especially rainfall season. And then enters into Bangladesh, जहाँ उसका नाम जमुना होता है, and then enters into Bay of Bengal. उसका life खत्म. And till now, China always keep debating with India कि हमारा ब्रह्मपुत्र का पूरा पानी आप खा जाता है या पी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. When it starts from Mansarovar, it is very thin, narrow, not too much water. But जब वो इधर आता है, अरुणाचल प्रदेश, that is the rainy season, and it is huge and it is very dangerous. So similarly, they'll ask you one state of India which is called as Sorrow, one river, Sorrow of dash state, Odisha. Now, what is that river name? हाँ, very good, महानदी. ऐसा याद रखो. Correct? अब ये होने के बाद then other states are very easy. ये हो गया, यूपी हुआ. अभी I always get confused between these two states. Chhattisgarh, it is somewhere near Maharashtra, whereas Uttarakhand, which is known as that Devloka state, जितना भी केदारनाथ वो सब है, इसके आगे से स्टार्ट होता है. गंगा को नाम इधर ही मिलता है. देवप्रयाग अलकनंदा करके एक जगह है, वहां से उसका नाम गंगा पड़ा. Okay, this is Uttarakhand and tiny state is Himachal. Next right is Punjab और Haryana. अभी now you have to make this in exam. ये देखो 3/4 पार्ट आके जम्मू कश्मीर का लद्दाख में चलेंगे और छोटा सा पार्ट जम्मू एंड कश्मीर. अभी यहाँ का इलेक्शंस हुआ है, जम्मू कश्मीर में मालूम है, लद्दाख का नहीं हुआ. And Ladakh first time they say कि we will get a chief minister who is from a non-Muslim background. ये सब देखो कैसा बीजेपी ने गेम खेला है. And अभी भी जम्मू कश्मीर आके फुल स्टेट नहीं है. इट्स लाइक एलजी दिल्ली का जो है ना, आधा स्टेट और आधा यूटी है, उधर भी एलजी है. अभी जैसे ये इनका अब्दुल्ला फैमिली आया है, तुरंत अभी टेररिज्म फिर से स्टार्ट हुआ है ना, फिर से वही लड़ाई झगड़ा चालू, पता नहीं. एंड ये ऑलवेज मिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनका बेटा और उनका डैडी हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहते हैं. पाकिस्तान से बात करना है, पाकिस्तान से ये करना है ना. वो तो बहुत बड़ा फालतू उसकी है. उसका जो उमर अब्दुल्ला है ना, जो लड़का, और अपना राहुल गांधी को मिला के देखो, एग्जैक्टली सेम ही रहेगा तो देखने में. तो किसी ने बोला इंदिरा गांधी का उधर भी अकाउंट खुला है, हाँ हो सकता है. She has opened in Bangladesh. I have gone to Andaman. There also she had one account. उधर भी उधर का राजा के साथ उसका, मतलब इंदिरा गांधी was so influential leader. But she is one of the strongest PM देखो पर्सनल लाइफ. बट ये जब राहुल गांधी बहुत बोलता है ना, मैं ये है मैं वो है, तभी मुझे बोलता है पहले तो अपना फैमिली हिस्ट्री पढ़ ले, तू क्या है पहले वो है ना. फिर सडनली तू इंडिया के बारे में कुछ भी बोलता है. ही गोस टू लंदन एंड ही सेज इंडिया इज नॉट इवन अ स्टेट. कितना गंदा बंदा है ना. इंडिया में रह के तो इंडिया के बारे में बोलते चलो मानते हैं, उधर जाके उनको बोलता है, अमेरिकन को बोलता है आप आके हमको हेल्प करो, इंडिया का डेमोक्रेसी क्या टेंशन में है, खड्डे में जा रहा है, अमेरिकन जाके तुझे हेल्प करेगा. एंड देयर इज अ फेलो कॉल्ड जॉर्ज सोरोस. नोबडी व्हाट इज ही इज अ पर्सन हु इज 84 इयर्स ओल्ड. 84. और उसके पास इतना पैसा नहीं, जितना भी एशिया में गवर्नमेंट बनता है या देता है, पूरा उसी का पैसा से. Many people say कि Mr. Rahul is funded by George Soros. He might be getting it. ये लंदन भागता है, अमेरिका भागता है, उसको पैसा कहाँ से? George Soros is a very big industrialist and he is a big politician. King maker बोलता है ना, जितना भी एशिया का गवर्नमेंट है ना, पूरा उसके हाथ में. अभी बांग्लादेश को गिराने के पीछे भी उसका है. अभी आपको क्या मिलता है? There is a movie if you watch जेम्स बॉन्ड का. एक बंदा रहता है, बोलता है कि मैं अफ्रीका में जाके पानी ढूंढ रहा हूँ, और आइलैंड खरीदता है. पानी वगैरह नहीं ढूंढता, पेट्रोल ढूंढता है. और उधर का जो डिक्टेटर को पैसा देके उस गवर्नमेंट को गिरा देता है. जैसे डिक्टेटर आएगा बोलते कितना आइलैंड चाहिए, सब रख लेगा. अंडरस्टूड. तो इंडिया में भी ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स गेम चल रहा है. एंड राहुल वाज फंडेड डायरेक्टली बाय चाइना गवर्नमेंट, अभी भी करता है. एंड राहुल हमेशा चाइना के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा. कितना लोग हैं? Count boys, girls are only 5. Will have chocolates only? 8 है. Sure? अरे टोटल बता दे 8 प्लीज. 8 नहीं
Since you asked chocolate for the maps, not for anything else. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को भरोसा नहीं किया तो डिक्लेयर क्या सामने स्टाफ को बताता हूँ तो ये मैं बताता हूँ स्लाइड हाँ या कितने डिग्री से काटा So the next part of the map where you get a lot of confusion is this. Punjab and Haryana has only one capital. That you know that? Why they placed it during the winter and before and after the winter. And which gets more severe winters, Punjab or Haryana? It is mainly Punjab. And अभी हरियाणा में नया गवर्नमेंट आया है. Which government it is? BJP has come the third time. पूरा हरियाणा का हिस्ट्री में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट 3 बार नहीं आया है. Because Haryanvi people are very volatile people are. Okay. फिर भी BJP is Haryanvi. ये बिहारी है Then अगर किसी ने पूछा mark the state which is geographically the largest state, it is not this or this, it is Rajasthan. अगर आपको डाउट है तो इधर किधर भी एरिया में कुछ देखेंगे ना, देखो टोटल एरिया इंडिया का दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, हेमिस्फीयर भी दिया है. This is how we have to read the map. And Rajasthan is the biggest state. And where is this Ran of Kutch? Gujarat. Where it is? Kutchi area. And इसका मुंद्रा port है ना, I will show you somewhere here. It is one of the costliest port, and again Mr. Adani has told it. And she told me that Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli, और वो है दमन. दमन इस पालघर गया है कभी, पालघर से आई थिंक हार्डली 2 घंटा भी नहीं, 1.5 घंटे का रास्ता है बाई कार से दमन. बट से यूनियन टेरिटरी. और क्या है, चलो फटाफट मार्क कर लो. All the states. Yes. अरे नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्टर्न. बोलो. हाँ दिल्ली, सॉरी हमारा दिल्ली देखो का किधर है. इधर हरियाणा एंड ये उत्तराखंड का इधर है. ये है. तो मैं बोलता हूँ दिल्ली दिल वालों का, मुंबई किडनी वालों का. इधर खरीदार बेच सकते हैं और गुर्दा वो सब आदमी बेचेंगे. लंग्स होते हैं. क्या करने का तो उस पेड़ में है क्या? चलो let us go into the two chapters which I have not touched. क्या हो गया? हाँ, please click to the map of this chapter. Yes. पहला water resources हो गया. उसमें rivers of India आप लोग ने किया लगता है ना? Dams ये map किया है everyone? One time many people got stuck. The only dam in the Jammu and Kashmir. Salal. Which river it is? It is not a river. It is a tributary of river Indus. How did they ask? Mark a dam which is on the tributary in the northeastern part. चलो ये मैप दोबारा बनाओ in practice मैप. अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है तो उसी में बनाए क्या? चलो. It is on page number 69. चलो सलाल डैम ये ले किसका देखो. सर ये किया हुआ है. हाँ तो नहीं किया जो करो या फिर से मार्क कर या गो टू द नेक्स्ट मार्क. वन दैट. हाँ ठीक है.
नहीं ये प्रैक्टिस मैप सब इधर उधर छोड़ दो मत. Always take it to your house. Keep it. The more you practice, the more better it is for you. टेहरी डैम, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम लोग हमारे स्कूल में टेहरी डैम बोलते थे. टेहरी नहीं है एक्चुअली टेहरी. अरे याद रखने के लिए कुछ तो शॉर्ट टेहरी डैम. And which is the only dam in the state where it is called as the driest part of India? Rajasthan canal. राणा प्रताप. And पानी आता है पंजाब से. Just inaugurated by Mrs. Indira Gandhi. It is also known as Indira Gandhi Canal. Shall I show some videos of that? हाँ दिखा रहा है अरे उसमें एक्चुअली वीडियो दिखाते हैं वो पूरा बताते हैं. रुक मेरे पास है. So very good. वो उस कैमरा में दिखा रहा है हाँ हाँ यही तो मैं उधर ही करूँगा. फटाफट कर लो. 2 ही चैप्टर है मैप का. You have good time to watch the Gandhi history. नहीं ये सब मैं तो बोलता हूँ सबको मालूम पड़ना चाहिए. ये गांधी और नेहरू ने पूरा हिस्ट्री को उल्टा कर दिया. और टेक्निक में मुझे लगा They made those historians who will support their history only. और उनको बोला गया था कि इतना ही लिखना है. सुभाष के बारे में कुछ नहीं. And out of 14 committees, only 1 or 2 committees supported Nehru as the prime minister. And बाकी पूरा 12 कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला था he has to be the prime minister. And अगर वो बनते ना पाकिस्तान अलग नहीं होता. और ये कश्मीर का भी प्रॉब्लम कभी नहीं. He was a person of a very strong. बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ किया. उसी टाइम पर इतना पॉलिटिक्स. तो इंडिया का आधा से ज्यादा प्रॉब्लम उधर ही खत्म हो गया. So लाल बहादुर शास्त्री का डेथ कैसे हुआ? Why did he die in Tashkent? And that was a part of Uzbekistan. In those days it was USSR. And उस पिक्चर में तो उन्होंने पूरा इंदिरा गांधी का नाम भी लिया. She took lot of money from Russia. You as a citizen of India must know what India has gone through. अभी थोड़ा सा ठीक है but you never know what is going to happen. Next time मालूम पड़ा राहुल गांधी becomes the prime minister. मुझे तो लगता है खुशी से 2 दिन में टूटेगा भी. थर्ड डे बोले अच्छा मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया. अब नहीं तू आलू से सोना की कर देख हो गया. Now for the next map that we have, show me that. The other important chapter in which the maps are. I have marked minerals and energy. Yes. Sure. Yes. Don't keep saying yes. करके. ये तो हाँ बोलो. Yes. Then agriculture में ना the 2 important maps that you have to be very careful. One is rice and other is wheat. Look at ऐसे ही मार्क करना है they will ask the major regions of the rice producing. Which is the major? West Bengal. सबसे ज़्यादा वही produce करता है. Consumer. Correct. And which is the major producing wheat? Punjab and Haryana. वो याद रखिए. Then tea and coffee is very important. Where it is? ये कुछ map है. Sugar cane का अभी mark करो and tea and coffee का भी mark करो. चलो. Cotton, jute, tea, coffee. सबसे के video ready हो गए. Sir, you already marked it. They might ask like that. Locate the place. One. और already mark करके पूछेंगे this is that place. हाँ. Tulia, that's right. You guys like this? Yes. Sure ना? Yes. ऐसे तो बोलेंगे सर ने फिर सस्ते में कुछ खिलाया कि हेलो भाई हैप्पी दीपावली. You guys did not give me. बच गया तो देता हूँ एक्स्ट्रा. डोंट वरी यार. आप लोग के लिए नहीं लाता हूँ. गर्मा गर्म है उसके लिए बैठी बना देंगे.
क्यों भाई गरीब की तरह बेटा? अरे ये दिवाली का मेरे पास आ जाओ, बड़ा करके दूंगा, बट वो आप लोग अंडर एज में मैं खुद भी नहीं खा 45 days नो नॉनवेज आइडिया से हैप्पी होना नहीं। खाओ खाओ, पहले खाओ फिर पानी पियो फिर मैं अच्छा है क्या? तो चॉकलेट से बार बार और भी है 3 से तो anybody not liking it or like खत्म हो गया लो तो आई लाइक इट। इसको क्या बोलते हैं लोग? नान कचाई, कुकीज, इंडियन कुकीज। अरे हम लोग बर्गर इतना खाते तो मुझे याद है बड़ा पाव के लिए मुझे इतना ये होता था ना, उधर किसको देखते हो बड़ा पाव खाने में? सेव इन माय एक वीडियो देखो नाम मेरा सोनिया इंदिरा गांधी। ये तो बहुत ज्यादा पानी मेरे पास अरे हाँ शॉर्ट ऑफ Hey guys, anybody need the extra one? Please अरे वाह मौका से बोलते हैं बॉडी कौन है माउथ बॉडी ये सब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ इसके साथ चाय हो जानी चाहिए ना? अब चाय पीते हैं? ये मूवी लोग ने अभी रिलीज नहीं करने दी ये भी पोस्टपोन हुआ है। हाँ पोस्टपोन भी किया, बहुत कुछ इसका अंदर का चेंज कर दिया। What is 45% वाले? अभी तो कितने लग गए एक बार चेन्नई गया था, there is a college which is generally very famous college, it is called as Loyola and ladies college, girls का। ये भाई साहब को ऐसा रैंप वॉक जैसा बना दिया, ऐसा मॉडल की तरह चल रहा है। He is physically better। किसी लड़की ने पूछ लिया कि आपका पास 6 पैक्स है क्या? And आप डिप्स, ये भाई साहब उधर ही डिप्स किया भी उसने। केरला में it was an official तो पानी में जा रहा था, किसी ने पूछा साहब आपका स्विमिंग आदत अच्छा है, तुरंत पीछे में एंड यू स्विमिंग आल्सो। अगर मैं उधर रहता तो चल बोट लेके निकलता अंदर ही रहेगा। चलो यही दिक्कत है, बट यू शुड वॉच इट। ये जब वो उधर वैसे मेरी सीधा वो हटा के टाइम ब्रिटिश Yeah, the roundtable conference is going by shift. He had 3 sons, किसी पूरा नहीं, उसका खुद का 3 बेटे थे। Mahatma Gandhi is actually moved to the South Africa because he supported rescue.
He's wearing a normal setup and look at the clothes. He's going to that place. Ramdam. जब बहुत क्राउड था तो उसको पीछे के रास्ते से अंदर लेकर गए. He's making fun of the dress up. Best of luck, guys, for your examination. And listen, if you have any other doubts besides all this, you can do the sessions. Okay? So, it was nice gesturing with all you guys. God bless you. See you with your good results. Okay, that's the only promise I want.